बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के बारे में। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के अंदर क्या मौजूद होता है, कौन से स्पोर्स होते हैं और कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर का इंतखाब किया जाता है। मिसाल के तौर पे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर इस्तेमाल होता है उसमें कौन से स्पोर होते हैं। ड्राई हीट के लिए जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर इस्तेमाल होता है उसमें कौन से स्पोर होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। देखते रहिए फार्मासिस्ट फरहान। Moist heat sterilization. For moist heat sterilization, heat-resistant spore-forming microorganisms such as C. Sporogenes B. Subtilis or B. Atrophaeus are chosen as biological indicators. Let's talk about indicator used in other processes. Dry heat sterilization. Spores of B. Atrophaeus are typically used for dry heat sterilization. Gas sterilization. Spores of B. Atrophaeus are traditionally used for verification of ethylene oxide. Sterilization processes. For other gases, spores of G. Sterothermophilus or B. Atrophaeus are often used, like Pharmacist channel on YouTube.